Assalamu alaikum. My name is Ifrah Mehmood and I am a faculty member from English department at GCU. Today we will be talking about the book When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi. This book basically talks about life and death, how a life is made worth living, or how you can understand death in a better way, and how you can leave a legacy behind you which can continue even after your death. So Paul Kalanithi was basically a neurosurgeon, and he was among the best neurosurgeons in the town. And this book is his autobiography, how he discovers his own disease और फिर वो किस तरह से अपनी disease से fight करने की कोशिश करता है, किस तरह he tries to live a life which has some meaning in it, how he helps other people to live better lives, and in what way does दिस लाइफ इफ़ेक्ट अदर पीपल कि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द समरी ऑफ द बुक. और उसमें ये है कि देयर इज़ दिस पर्सन पॉल and he lives with his wife Lucy, and he is a very hard working person. But before his marital life starts, his father came to the town, and because he wanted to provide a better life for his sons. So Paul and his brother, they were both in town, and they were working as pre-medical students. So after some time he finds that he cannot connect with medicine as much. तो वो क्या करता है कि he goes into a university and he starts studying literature. But as you all might know कि literature जो है वो ज़्यादातर आपकी अपनी life से related है. It teaches you a lot of things about life, how to live life and how to be a better human being. तो in all of his learnings that he does through literature, वो ज़्यादा करीब हो जाता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के कि बेसिकली लाइफ और डेथ है क्या, और आप किस तरह की लाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी कह सकते हो. ठीक है, या किस तरह की लाइफ को आप ये कह सकते हो कि एक इंसान ने एक्चुअल में लाइफ जी है. ठीक है, तो दैट इज़ द क्वेश्चन विच बेसिकली ड्राइव्स हिम बैक टुवर्ड्स मेडिसिन. उसको ये लगता है कि अब अगर आई हैव स्टडीड लिटरेचर एंड आई वुड गो बैक टू मेडिसिन, तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड मेडिसिन एज अ फील्ड, एंड आई वुड बी बेटर एबल टू ट्रीट पीपल एज अ डॉक्टर. This is how he keeps on going. Then he studies medicine, he goes into neurosurgery, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं. ठीक है, and that is how when he becomes a surgeon he asks himself questions जो normally doctors अपने आप से नहीं पूछते. ठीक है, so this serves as a turning point in his life. There was an incident which he himself narrates in the book कि there was this patient जिसकी उसको ब्रेन सर्जरी करनी थी, एंड ही वॉज रेडी टू ऑपरेट ऑन द पेशेंट. लेकिन वहाँ पे एन अदर पर्सन टेल्स हिम कि इफ़ यू कट 2 millimeters डीप, दैट पर्सन वुड हैव अ लॉक्ड इन सिंड्रोम, जिसमें वो पूरा का पूरा पैरालिसिस में चला जाएगा, एंड देयर वुड बी ओनली मूवमेंट वुड बी द ब्लिंक ऑफ हिज आइज़. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ डॉक्टर्स as persons they treat people, but at the same time the treatment might cause an irreversible damage, as in the case of the locked-in syndrome patient. So these were the questions that he asks in the book, and how he tries to bring us, the readers, closer to the life of doctors, to the life of surgeons. अब वहाँ पे उसने एक स्काल्पल का सिंबल यूज़ किया है, which basically serves as a tool to cure people, but at the same time the scalpel, if it cuts something else which is not required to be cut, अगर वो हो जाएगा तो how would the life of the patient be affected. ठीक है, sometimes the patient might live a few months or a few years longer, but he won't be able to speak, and sometimes the patient might be paralyzed for the whole life that he will lead afterwards. So these are some important questions that we as persons need to understand. That is why the doctors ask for your consent before performing a surgery. Sometimes they might be hard on us, and they might tell us that there is no hope for the patient, and I can personally relate to it because I have been through situations like that, and I am sure all of us can relate to these things at some moment. We all have lost some loved ones, and we all have visited hospitals once or twice in our lives with a patient very critical and very dear to us. So I think these are questions that should be asked, and that should be answered by the doctors too, and Paul has very much tried his best to answer these questions.
So what happens is कि keeping all these questions in mind, he tries to treat his patients in the best way possible, or ultimately he starts having severe back pains and severe digestion issues and all of these things, severe headaches. So he goes to a doctor with his wife Lucy, और वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि he has lung cancer and he won't be able to live a longer life जिस तरह उसने एक्सपेक्ट किया था. दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे वो अपने डॉक्टर को कहता है कि आई डोंट वॉन्ट यू टू ट्रीट मी एज अ पेशेंट, आई वॉन्ट यू टू ट्रीट मी एज अ कंसल्टेंट बिकॉज आई नो एवरीथिंग अबाउट कैंसर. आई माई सेल्फ एम अ सर्जन एंड आई एम अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन साइड मी, तो डोंट ट्रीट मी लाइक अ नॉर्मल पेशेंट. अब वहाँ पे हिज डॉक्टर एमा, she starts treating him as somebody who is aware of his condition, who has all the knowledge of what is going on inside his body, inside his brain, inside his lungs, everything. And they embark on the journey of his cure, of his treatment. Okay. At times he starts getting better. He gets all of his medicines, all of his treatments, but at the same time he feels himself very weak as a patient, क्योंकि he says कि when I was a surgeon I was very authoritative and I was very clear on my instructions to patients and their attendants, लेकिन when I myself am a patient तो मुझे उस तरह से डॉक्टर बनना ही नहीं आ पा रहा कि मुझे किस तरह से अपने पेशेंट्स को डील करना चाहिए, किस तरह उनको ट्रीट करना चाहिए. एंड दैट इज़ हाउ ही ट्राइज़ टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, कि अगर मैं बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकता तो मैं बेहतर इंसान बन सकता हूँ. दैट इज़ वेयर ही ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड हिज पेशेंट्स एंड द अटेंडेंट्स, और उस तरह उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि जब हम एक्चुअल में एक पेशेंट को, एक अटेंडेंट को उसके पेशेंट की सारी रिपोर्ट दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि आपका पेशेंट बहुत क्रिटिकल एंड ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव मच, तो उस टाइम पे उस अटेंडेंट की क्या सिचुएशन होती है, या वाई डू द अटेंडेंट्स फील हेटेड टुवर्ड्स द डॉक्टर्स एट दैट टाइम. This is how the normal story goes, and with the story progressing there is a time when he is at the 4th stage of his cancer, and when he is told by Emma कि you have a very less time to live. तो तब वो ये सोचता है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीना है, या अपनी ज़िंदगी के पीछे ऐसी कोई लेजेसी छोड़ के जानी है जिससे बाकी लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके, जिससे बाकी लोग कुछ सीख सकें और कुछ और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें. दैट इज़ व्हेन ही मेक्स द डिसीजन ऑफ राइटिंग अ बुक, एंड दिस इज़ हाउ when breath becomes air comes into being. He starts writing the book, he starts writing his own autobiography, he starts writing about his illness, about the treatment that he's undergoing, about his chemotherapy, about how he feels towards it, about how his relationship with his wife changes during the course of his disease, and how they come to the decision of adopting a child, of adopting Katie, his daughter. Or the ending moment of the book was very traumatic but very close to my heart, because he thinks he has an oxygen mask on his mouth, and he knows that he won't be able to breathe without oxygen, क्योंकि उसके lungs जो हैं they are not able to retain the breath in them. बट एट दैट मोमेंट ही थिंक्स कि ये जो आखिरी कुछ लम्हों की तकलीफ़ है इसको ऑक्सीजन मास्क में गुजारने से बेहतर है कि आई स्पेंड दिस टाइम with my daughter, talking to her, telling her about myself and knowing more about her, although she is just 2 years old. So this is how the course of the book changes into the course where we feel very relatable to Paul, where we feel कि अगर कोई भी इंसान उसकी जगह पे होगा तो शायद वो इसी तरह का कोई डिसीजन करेगा कि जो दिस इज़ अ होप टू क्लिंग ऑन टू लाइफ फॉर द वेरी लास्ट मोमेंट्स, कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो की जाएं, बजाय इसके कि आप तकलीफ़ की शिद्दत में वो अपना जो मोमेंट है या वो जो अपना टाइम है वो गुजार दो. This is how Paul tells us about how death chases us through life and how we should lead our lives in order to be better humans. अगर उस टाइम में वो ये चूज़ करता कि वो ऑक्सीजन मास्क के साथ वो टाइम्स गुजारे और अपनी बेटी से बात ना कर पाए, तो शायद दिस मोमेंट वुड नॉट हैव बीन एज मच रिलेटेबल टू अस एज इट इज़ नाउ. सो आई थिंक this is how this book talks about various elements of human life.
Now, this book majors some cover themes of human mortality, about ethicality, about the ethicality of the doctors, about the hypocritic oaths that the doctors take, about how we should lead our lives, about how we should be more compassionate and more loving to the people around us, and how can we understand death. There is this line in the book where he says that sometimes terminal illness is something which is very necessary for a person who wants to understand death. जब आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे होते हो, जब आपको पता होता है कि एक दिन आपने मर जाना है, जब आपको पता है कि आपकी लाइफ का टाइम ख़त्म हो जाना है, मेरे ख्याल में तब ज़िंदगी जीने से बेहतर आपको कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती. और दैट इज़ व्हाट पॉल टेल्स अस थ्रू हिज बुक. कि now this takes me to another book, जुस्तजू का सफ़र. देयर वॉज दिस लाइन इन विच द नैरेटर सेज के ही वॉज सिटिंग इन अ मदरसा, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे मदरसे के जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे. एंड व्हेन ही आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स कि आपने हर वक्त ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हुए होते हैं, तो दे टोल्ड हिम कि सफ़ेद क्योंकि कफन का रंग होता है तो ये आपको मौत की याद दिलाता रहता है. अब अगर इस अप्रोच को देखा जाए तो लोग नॉर्मली मौत को दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. कुछ वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमने मर जाना है, तो वो ज़िंदगी की सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं, जो जीने की सारी उम्मीद छोड़ देते हैं और बस बैठ जाते हैं कि अब तो मर जाना है, तो अब कुछ करने का फ़ायदा नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर पता हो कि कुछ दिनों बाद उन्होंने मर जाना है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आखिरी उन दिनों को इस तरीके से जिएं कि लोग उनको याद रखें उनके काम की वजह से, और वो इस तरीके का कुछ पीछे छोड़ के जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके. पॉल इज़ अमंग द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो ये कोशिश करते हैं कि अगर उनको पता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बेहतर चीज़ करके जाएं जो बाकी लोगों के लिए भी बेहतर हो सके और जो बाकी लोगों को भी हेल्प कर सके. Okay, so we were discussing the major themes of the book, जिनमें I was telling you about how Paul talks about life and death. अब there is this particular aspect of mortality which he talks about, और mortality हम सबको पता है कि we are all mortal. Nobody is going to live on for years and years and not die ever. वो तो कभी possible ही नहीं हो सकता. हम लोग सब जो है वो एक टाइम के लिए लाइफ में आते हैं. Life is but a walking shadow. Or a walking shadow moves and with the light of the sun it also fades away. और वही सब कुछ हम इंसानों के साथ भी होता है. We are here and we won't be here one day. लेकिन what matters is कि हम अपने लिए और अपने पीछे वाले लोगों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेसन छोड़ के जा रहे हैं जिससे वो लोग कुछ सीख सकें या बाकी लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके. So there are some major things that he has used. अब all of you are aware of the title of the book, when breath becomes air. तो यहाँ पे दो symbolic चीज़ें हैं आपके पास, एक breath और दूसरी चीज़ air. Normally what we are breathing is air, but it symbolizes life in a way, क्योंकि आप जब सांस ले रहे हो तो वही हवा ही है जो आप अंदर लेके जा रहे हो, जो आप बाहर निकाल रहे हो. लेकिन at that time it is symbolizing life because it is helping us live. When a person dies, he won't be able to take in any air and breathe out any air. That is how the breath that was giving us life becomes air. That is how it becomes meaningless. जब आप सांस ले रहे हो तो वही हवा बहुत मायने रख रही है. वही हवा है जो आपको लेके चल रही है, जो आपको ये भी अलाउ कर रही है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात कर सको, उनसे कम्युनिकेट कर सको, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सको. लेकिन फिर वही हवा है कि जब आप सांस नहीं ले पा रहे तो that breath is actually turning into air, the cold air which does not symbolize anything, which does not symbolize life in its own. So that is how the title of the book is justified. And we were talking about scalpel. So basically the symbol of scalpel is used as a tool for treating people, but at the same time it is being represented as a tool which when not used in the right way can do a lot of damage, which when not used in the right way can cost someone, a person's whole life. ठीक है. नॉर्मली अगर आप इसी तरह से इस तरह के जितने भी टूल्स को देखते हैं, तो अगर आपके पास एक आयरन रॉड है, ठीक है, एट सम टाइम इट मे इंडिकेट सपोर्ट, लेकिन अगर वही रॉड किसी गलत पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा तो इट वुड बी डैमेजिंग, इट वुड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज.
इसी तरह if there is a knife and you cut it to you use it to cut fruit and to do a lot of beneficial things. At the same time it can also serve to end someone's life or bring misery or grief on someone. तो हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक तो जीना सिखाती हैं, एट द सेम टाइम उनके बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन वहीं पे वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. सो इट इज़ अप टू अस हाउ वी यूज़ डिफरेंट टूल्स दैट सराउंड अस ऑल द टाइम, how we use those tools productively, how we use those tools to bring some meaning and some positivity into our lives, how we use those tools for our own benefits and for the benefits of the people around us. लेकिन अगर उन्हीं को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो कितनी ज़्यादा चीज़ें डैमेजिंग हो सकती हैं. देयर इज़ अनदर एलिमेंट विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द बुक वेरी मच, और वो टाइम है. मुझे अशफाक अहमद साहब का वो कॉल याद है कि ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आपका वक्त है, क्योंकि वही है जो आपका अपना है, और वही है सबसे कीमती चीज़ जो आप दूसरों को भी दे सकते हो. तो दैट इज़ हाउ वी कैन जस्टिफाई द लास्ट मोमेंट्स ऑफ पॉल्स लाइफ, जब वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतार के अपनी बेटी से बात करना शुरू कर देता है कि ऑक्सीजन मास्क से ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपनी बेटी के साथ ये जो लास्ट मोमेंट्स हैं उनको गुजार सकूं. तो जो टाइम है, अब टाइम की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि देर इज़ दिस टाइम व्हेन यू इंडिकेट कि द टाइम इज़ 2:35. फिर देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड से कि आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम. देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड से कि टाइम passes वेरी क्विकली. देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड से कि टाइम तो गुजर ही नहीं रहा. तो आप टाइम की रिप्रेजेंटेशन हर इंसान के लिए सेम नहीं रख सकते, और वो सेम हो भी नहीं सकती. अगर मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है and someone else is going through a very hard time and he is facing a lot of difficulties and he does not have anything to look forward to, you cannot tell that person that the time is good, that the time would be fine, that it would pass and you won't be able to seize it. What matters is how we seize our time, how we use it, how we spend it in productive things, and that is what Paul did through writing this book. He left us a legacy to read and to understand how life and death can be so meaningful in the long run, how we can use our times productively in order to leave a legacy behind us, in order to leave something positive behind us for the people to relate to it and to learn different things from it. Okay, so times when we are happy are जब अच्छा वक्त गुजर होता है तो वो बहुत जल्दी गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता. लेकिन अगर वही वक्त इंतज़ार में, वही वक्त तकलीफ़ में गुजर रहा हो तो आपको वो बहुत लंबा लगता है. दिस इज़ आवर रेलेवेंस टू टाइम. हालांकि अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे में 60 मिनट ही हैं, लेकिन अगर आप उसी 60 मिनट में खुश हो तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी गुजर गया. और अगर उसी 60 मिनट में आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो या आप किसी दुख से, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा. दिस इज़ हाउ टाइम इज़ रेलेवेंट टू आवर फीलिंग्स, हाउ वी एसोसिएट आवर फीलिंग्स विद टाइम. हालांकि अगर वक्त को एज अ क्वांटिटी देखा जाए तो वो दुख में भी उतनी ही मिनट कंटेन करता है जितने वो खुशी में करता है. 1 घंटे में अगर 60 मिनट हैं तो वो दोनों चीज़ों के लिए 60 मिनट हैं. 1 मिनट में अगर 60 सेकंड हैं तो वो दोनों चीज़ों के लिए 60 सेकंड हैं. और अपने टाइम को अच्छा गुजारने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ टू रीड बुक्स, एंड दैट इज़ वाई आई हैव brought up this book in front of you, When Breath Becomes Air. I would recommend everyone watching this video to read this book to understand it on another level. I know I have spoiled a bit of the things for you, but I haven't spoiled all of this. There is a lot that this book contains and which you can read on your own and you can learn through it. At the end, I would like to quote something out of the book which will help you understand. The only thing I can tell you is, let me see, the only thing I can tell you is they can hurt you more but they cannot stop the time. That is how we can associate it with different diseases, with different sorrows that accompany us through our lives, with different people that come in our lives and leave us lurking in darkness.
and this is, I think, this statement is relatable to all of us in different phases of our lives. And then I would relate to one more thing through the book, which is, he who should teach men to die would at the same time teach them to live. And I think this is one of the best things that I've ever read. आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं जो आपको इतना ज़्यादा दुख और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे के जाते हैं कि आपको लगता है कि शायद इस सारी तकलीफ़ और इस सारे कर्ब से मौत बेहतर होती, बट एट द सेम टाइम दे टीच यू हाउ टू लिव, क्योंकि वो आपको ये सबक सिखा के जाते हैं कि आप अगर ज़िंदगी गुजारे और आप अगर कुछ लोगों के इतने करीब हो तो आपने उनको उस तकलीफ़ से नहीं गुजारना जिस तकलीफ़ से कोई आपको गुजार के गया है. बट एट द सेम टाइम डेथ इज़ इनएविटेबल, और हम में से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता, और हम में से कोई भी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जा सकता. वी कैन ओनली कंज्यूम द टाइम दैट वी हैव इन अ वेरी प्रोडक्टिव एंड अ वेरी बेनिफिशियल वे. वो इस तरह से कि जो लोग भी आपके इर्द गिर्द हैं उनको तकलीफ़ से बचाने की कोशिश की जाए, जितने लम्हे आपके पास हैं उनको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश की जाए. द टाइम दैट यू हैव, you should spend it more with the people around you, living through time, not just spending it. There is a hell of a difference between spending some time and with living the time that you have. और आई थिंक ज़िंदगी गुजारने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है ज़िंदगी जीना, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीने की कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है. समटाइम्स यू माइट बी पेइंग द प्राइस बाय बीइंग विद द पीपल हु हर्ट यू बट देन नॉट हर्टिंग देम. समटाइम्स पीपल माइट लीव यू बट यू हैव टू स्टिक टू देम anyway. Sometimes people might lie to you but you have to tell them the truth anyway. Sometimes people might hurt you but you don't have to hurt them anyway. Sometimes people would take away things from you but you still have to give them things. And sometimes people would try to snatch from you but you don't have to snatch from them in return. Sometimes all you have to do is keep doing good things no matter how bad people are doing to you. क्योंकि एट द एंड मुझसे वही चीज़ें पूछी जाएंगी कि मुझसे यही पूछा जाएगा कि मैंने ज़िंदगी में किन लोगों के साथ अच्छा किया और किन के साथ बुरा किया. मुझसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि अगर कोई इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं था या किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो उसने क्यों नहीं किया. मुझसे सिर्फ यही पूछा जाएगा जो मैंने किया, मैंने लोगों को किस तरह से ट्रीट किया, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, और मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा. I think that is, these are some questions that we all should have in our lives in order to understand life in a very better way. And I would recommend you all to read this book. Happy read.